अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनो शीन चौधरी और मेरे साथ हैं अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी चौधरी आसिफ अली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी। वी होप सो कि आप सब लोग ठीक होंगे, फ़िट होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं, उसका नेम है वाई बांग्लादेश इकॉनमी इज़ बूमिंग। तो ये तो हम सबको ही पता है कि इतनी सारी वीडियोस जो देख रहे हैं उनमें भी कि बांग्लादेश की इकॉनमी जो है वो बहुत आगे जा रही है, बहुत सारी कंट्रीज़ को क्रॉस किया है। तो इसके पीछे क्या क्या रीज़न्स हैं तो वो इस वीडियो में मज़ीद हम एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप टाइम से वीडियो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। Among South Asian economies, Bangladesh is touted as a rising star. In 2019, its per capita income was $1,856, substantially higher than Pakistan's $1,285 and only $250 less than of India. In 2020, Bangladesh might have edged ahead of India because it registered a growth rate of 2.4%, whereas India's GDP shrank by 7.3%. The figures put it ahead of the other Asian countries, including India. It could shed its least developed country status in 5 years. When it first became a country in 1971, Bangladesh was incredibly poor. The GDP growth rate was minus 14%. Politically, instability was rife, and the nation was devastated by floods and famine. Things have moved. Bangladesh now has an average growth rate of 8%, well above the Asian average, and Asian Development Bank figures show. A decline in population growth is also helping an increase in per capita income. The number of unemployed workers living below the poverty line dropped from 73.5% in 2010 to 10.4% in 2018. The economy of Bangladesh is characterized as a developing market economy. It is the 37th largest in the world in nominal terms and 31st largest by purchasing power parity. It is classified among the next 11 emerging market, middle-income economies and a frontier market. In the first quarter of 2019, Bangladesh was the world's 7th fastest growing economy with a rate of 8.3 real GDP annual growth. Dhaka and Chittagong are the principal financial centers of the country, being home to the Dhaka Stock Exchange and the Chittagong Stock Exchange. The financial sector of Bangladesh is the third largest in the Indian subcontinent. Bangladesh is one of the world's fastest growing economies. And to calculate, Bangladesh rises to the South Asia's standout star as India, Pakistan fall behind. India, eternally confident about being the only South Asian economy that matters, now must grapple with the fact that it too is poorer than Bangladesh in per capita terms. Between 2011 and 2019, Bangladesh's exports grew 8.6% every year, compared to the world average of 0.4%. The success is largely due to the country's relentless focus on products such as apparel, in which it possesses a comparative advantage. Meanwhile, the share of Bangladeshi women in the labor force has consistently grown, unlike in India and Pakistan, where it has decreased. And Bangladesh has maintained a public debt to GDP ratio between 30% and 40%. India and Pakistan will both emerge from the pandemic with public debt close to 90% of GDP. Fiscal refrains has allowed Bangladesh's private sector to borrow and invest. Bangladesh's success brings its own set of problems. For one, its exports benefit from the country's participation in various mechanisms that allow tariff-free access to developed economies. These groupings are only open to the world's least developed countries. Thanks to its growth, Bangladesh will likely have to give up these privileges by 2026 or so. As its economy matures, its comparative advantages will also change.
Like Vietnam and others, it will then have to shift emphasis away from garments to higher value exports. The transition will test Bangladesh as it has those other nations. The government needs a strategy for the next decade that focuses on new forms of global integration and on a continued transformation of the economy. The smartest thing to do would be to retain access to the developed world's market by signing free trade agreements. Work has started on the FTA with the Association of Southeast Asian Nations, according to Bangladeshi officials, but there's a lot more to be done. Once again, Bangladesh should become benchmark itself against Vietnam, which is not only part of the China-centric Regional Comprehensive Economic Partnership and the successor to the Trans-Pacific Partnership, but also signed an FTA with the European Union in 2019. In 1971, success seemed well beyond a long shot. Today, the country's 160 million plus people, packed into a fertile delta that's more densely populated than the Vatican City, seem destined to be the South Asia's standout success. Bangladesh's growth story has been a much touted one. The GDP growth averaged around 6% from 2000 to 2019, the World Bank data shows. It was not long before the term GDP growth became a catchphrase in the country. This is primarily because policymakers have ardently portrayed this metric as a vital sign of development, as it is reflected both in economic progress and human well-being. The majority of Bangladeshis have little idea how and whether at all this growth impacts their happiness. The GDP growth is an outlandish concept for the poor and those making a living in the informal economy. Even in 2020, when the coronavirus pandemic rocked economies around the world, Bangladesh managed it to be an outlier. It posted a 2.3% growth. That year, the economy of its neighbor India shrank by 7.9%. In fact, all South Asian countries registered negative growth in 2020 except for Bangladesh and Pakistan. In June, Bangladesh Finance Minister Mustafa Kamal said that the country would be on top of the rest of the South Asia and Southeast Asia in terms of GDP growth, considering the recent pace of the economy. Certainly, it would be an enviable achievement, but would Bangladeshis be significantly happier then? In fact, Bangladesh's poor happiness ranking shows there is another side of GDP growth story that involves a not-so-happy reality. In 2021, World Happiness Report, Bangladesh ranked 68 among 95 nations. The report specially focused on how the pandemic had affected the happiness levels of nations. Why is that? If only high GDP growth could make a nation increasingly happier, Bangladesh's happiness ranking should have leapt to prominence over time. Yes, economic growth has improved living standards globally. Bangladesh has also made significant strides in poverty reduction as its economy has grown. Poverty declined from 44.2% in 1991 to 13.8% in 2016 and 17. Life expectancy and literacy rates have increased markedly as well. So the biggest challenge Bangladesh faces is related to how the country ensures that the fruit of growth and development reach people at the bottom of the economic pyramid. जी तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। बाकी जो पहले भी वीडियोस देखते हैं उनसे भी अंदाज़ा होता रहता है, और इसमें भी बता रहे थे कि बांग्लादेश का जो जीडीपी है वो ग्रो किया। इवन जो पैंडेमिक था इसमें कोरोना में भी बाकी सब मुल्कों का जो है वो नेगेटिव में गया, लेकिन बांग्लादेश का जो है वो पॉजिटिव में गया है। तो उसकी वजह से लाइफस्टाइल और बाकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है सब कुछ उसमें चेंज आता है। और जो है बांग्लादेश का एक सिटीज़न जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के सिटीज़न से जो है वो ज़्यादा अर्न कर रहा है।
तो और इसमें उन्होंने ये भी बताया कि जो बांग्लादेश की जीडीपी का जो मेन है वो पार्ट वो चिटागोंग और ढाका जो है वो उसमें ज़्यादा पार्ट प्ले करते हैं, दोनों जो है दोनों मुल्कों की सिटीज़ की स्टॉक एक्सचेंज, चिटागोंग की भी और ढाका की भी। तो इट्स वेरी गुड, बहुत खुशी होती है देख के और सुन के कि बांग्लादेश ने जो है वो इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट किया। और कोविड में जहाँ हर मुल्क जो है उसको जीडीपी जिसकी नेगेटिव में आई है, कम हुई है, वहाँ पे भी बांग्लादेश ने जो है अपने आप को मनवाया है। लास्ट वीडियो थी जिस तरह वो बता रहे थे कि बांग्लादेश का जीडीपी जो है ना इंडिया और पाकिस्तान से आगे निकल चुका है, जो नॉमिनल जीडीपी है, ठीक है। वैसे तो बांग्लादेश का पाकिस्तान से तो आगे निकल ही चुका है, लेकिन इंडिया बहुत बड़ा है। अगर कंपैरिजन किया जाए तो इंडिया बड़ा है, उसका नंबर्स ज़्यादा हैं, लेकिन बांग्लादेश का जो एक शहरी है ना नॉमिनल जीडीपी, वो इंडिया से ज़्यादा अर्न कर रहा है। बांग्लादेश की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, उसके अलावा हेल्थ सेक्टर है, जो इनका गारमेंट सेक्टर है, हर चीज़ में बांग्लादेश बूम कर रहा है। और 1971 के बाद से बांग्लादेश आगे ही जाता जा रहा है, ठीक है। 2014 में 6% था बांग्लादेश का जो जीडीपी ग्रोथ था, और 2018 में वो 8% और 9% तक पहुंच गया था। फिर उसके बाद पेंडेमिक आया तो फिर भी 5% है। जहां पाकिस्तान और इंडिया माइनस में जा रहे थे, लेकिन बांग्लादेश का जो जीडीपी था वो फिर भी प्लस में था। तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग फैक्ट हैं। वी रियली लाइक दिस वीडियो। वी होप सो कि आपको भी वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे फॉलो कर लिया करें ताकि हमारी एक्टिविटीज़ आपको पता चलती रहें। वहाँ पे भी आप मैसेज करके वीडियो रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये वीडियो भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।